appeal from original decree. 96 subsection 1, save where otherwise expressly provided in the body of this code or by any other law for the time being in force. An appeal shall lie from every decree by any court exercising original jurisdiction to the court authorized to hear appeals from the decisions of such court. अब मुझे बताइए सर, आपने पढ़ा था दैट अपील का एक यूनिवर्सल राइट नहीं अवेलेबल होता, पढ़ा था ना? सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 कहता है सेव वेयर अदरवाइज, अदरवाइज मतलब अगर इससे उल्ट कोई चीज, समथिंग विच इज juxtaposed to this principle. It says save where otherwise expressly provided in the body of this code or by any other law for the time being in force. An appeal shall lie from every decree. मतलब जहां जहां ये कोड दैट इज सीपीसी या कोई और लॉ मना नहीं करता, अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी डिग्री. तो यूनिवर्सल हुआ कि नहीं हुआ? अंटिल बार्ड. भयंकर बिक रही है सब कुछ, है ना? पढ़ रहे हैं, फिर पेटेंट लेटेंट पे आ जाते हैं. देखो 96 सबसेक्शन 1 ही कह रहा है, इट सेज सेव वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड in the body of this code or by any other law for the time being in force, an appeal shall lie from every decree passed by any court exercising original jurisdiction to the court authorized to hear appeals from the decisions of such court. यानी कि जिस भी कोर्ट ने, 96 क्या बात कर रहा है, जिस कोर्ट ने अपनी ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए, दैट मींस अगर वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है, that is the court in which the suit had to be instituted in the first instance. For example, let us say there is partition of a property worth 1.5 crores. In Delhi, where will the suit be instituted? District court, yes or no? So district court is the court exercising original jurisdiction. That is the court of first instance. तो अब district court में suit institute हुआ, decree pass हुई, if not barred, then appeal will go to which court? High court. The appeal will go to the high court. If it is a matter of, let us say, a breach of contract, the value of the contract being 15 lakh rupees, in Delhi, where will the suit be instituted? Civil judge. And if civil judge has passed a decree, where will the appeal lie? District court. Then after that, from the district court, ये लिखा नहीं है इसमें, लिखा ही नहीं. ये अपील की बात करता है from the court of original jurisdiction. सिविल जज से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दैट्स ऑल इस एग्जाम्पल में, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट इस एग्जाम्पल में, दैट्स इट. इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट वी नो एज फर्स्ट अपील. इट इज टॉकिंग अबाउट फर्स्ट अपील. अगेन लेट्स रीड इट. इट सेज save where otherwise expressly provided in the code of this in the body of this code or by any other law for the time being in force, an appeal shall lie from every decree passed by any court exercising original jurisdiction to the court authorized to hear appeals from the decisions of such court. ओरिजिनल jurisdiction के कोर्ट से, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस से अपील कहा जाएगी, ये सिर्फ उस अपील की बात कर. 96 सबसेक्शन 2, an appeal may lie from an original decree passed ex parte. That means even if there is an ex parte decree passed, let us say against the defendant, of course against the defendant, can you go in for setting aside this ex parte decree in the same court? Can you go in for setting aside the ex parte decree in the same court? Order 9 rule 13, you can go in for setting aside of the ex parte decree. भाई तुमने पास करी ex parte decree, तुम इसको set aside करो. Can you appeal? Yes, you can even appeal against an ex parte decree. 96 subsection 3, no appeal shall lie from a decree passed by the court with the consent of the parties. कहां है consent decree, कहां है? Order 23 rule 3, very good. Order 23 rule 3, consent decree, जिसको compromise decree भी कहते हैं, consent decree भी कहते हैं. So if there is a consent decree, you cannot appeal from such consent decree. Why? Why? ये मैंने उस समय भी बताया था. Why? Rule of estoppel. You are stopped
यू हैव योर सेल्फ। अब एक तो होता है कोर्ट, अब यू सी प्लेंटिव है, डिफेंडेंट है, कोर्ट है तो बाई पार्टी सिस्टम। बट अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं एक थर्ड फैक्टर इन्वॉल्व है, कोर्ट। आप कुछ भी सीखते चिल्लाते रहो, हो सकता है कोर्ट कोई डिसीजन वो दे दे जो आपकी एविडेंसेस, आपकी प्रोपोजिशन से डिफरेंट हो। नाउ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कोर्ट बीइंग अनदर फैक्टर इन्वॉल्व इन द डिसीजन, it is a possibility that you might think that the court is not going to pass a very good decision, or it is going to be delayed, or I am going to suffer unnecessary expenses. So what I should do is I should come to a compromise. You come to a compromise. Now nobody has interfered in that compromise. The court has not dictated the terms. The court is not the deciding factor. The court is not the authority who has interfered in your process. You have yourself come to a mutually satisfactory disposition. आप दोनों ने आपस में बातचीत करके, समझौता करके आप एक कंक्लूजन पे आए हैं कि भाई मैं 10 लाख मांग रहा था, वो कह रहा था 5 लाख दूंगा, हम दोनों 6 लाख रुपए पे आके सेटल कर दिया, कहानी खत्म। इंटरेस्ट रिपब्लिक एट फिनिश लिटियम। अब आप दोनों कंसेंट कर रहे हो, आप दोनों एक कॉम्प्रोमाइज पे आए हो, और अब आप उसी कॉम्प्रोमाइज से अपील करोगे, इट इज नॉट अलाउड। 96 सबसेक्शन 4 प्लीज। No appeal shall lie except on a question of law from a decree in any suit of the nature cognizable by courts of small causes when the amount or value of the subject matter of the original suit does not exceed 10,000 rupees. यानी कि no appeal has to be filed in extremely petty cases. No appeal has to be filed in extremely petty cases जहां पे court of small causes or value is below 10,000, you will not go into appeal. You cannot go into appeal. An appeal is barred unless there is a question of law. अगर एक क्वेश्चन ऑफ लॉ आपके समक्ष आ रहा है, क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है अभी हम करेंगे। क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर आपके सामने आ जाता है, then you can go in appeal. But as a regular course, can you go into appeal? As a regular course, can you go into appeal if there is a petty case? No, you cannot. Below 10,000, court of small causes, you cannot go in.